الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. I seek refuge in Allah from devil the outcast, in the name of Allah the most beneficent and the most merciful. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Read with the name of thy Lord, with these beautiful words. I, Dr. Kashif Suhail Malik, welcome you all to the International Islamic University Islamabad School's online induction course, OIC 2024, which started yesterday on Monday 2nd of September and will end, inshallah, will go till Friday 6th of September 2024. Today, we will inshallah work on the second day, and on the second day our agenda of the day is an orientation to the IA schools book list, curriculums and breakups, and this was supposed to be done by Mr. Shah Nawaz, but unfortunately he has some personal family issues, so he is unable to join us. So inshallah I will be moderating that, conducting that session for you. The second session is the first session is an orientation to IA schools, book list, curriculum and breakups. And inshallah, for the second session, we'll have a wonderful person, Dr. Majida Hassan. She will be speaking on IA schools curriculums, a tool for excellence in teaching. So this is our agenda of the day. And inshallah, as we proceed, by the way, an important thing which I would like you all to know for today is, so let's keep it very informal, and you should be, feeling comfortable asking any questions at any point in time. So let me get back to, I could see, I've told you already, some of us are more interested in, what do we call it, getting attendance links every day. So by anyways, that's also, I understand that's also part of the this event. Since you have to ensure that you have your attendance marked properly, let me get your attendance link now before moving on to, this is attendance day 2 and the start of the session attendance. By the way, all the teachers who have been with us, they know that they have to have an attendance every day. And for each session, the attendance will be marked twice. Once in the beginning of the session, and the other one will be, in fact, each session has 2 attendances. So if there will be 2 sessions, for each session you will have separate attendance. And if there will be 1 session, still attendance in the beginning and attendance at the end will be marked. So let me share with you now the attendance link for your day. It is in the chat box, so please mark it there. And I request you all to please do not write anything so that people find it easy to mark their attendance there. Now coming back to the agenda, so having shared the attendance,
Today's main session is about an orientation to the IA schools book list, curriculum and breakups. But yesterday, when we were talking about the introduction of IA schools, we shared lots of things, but I think one very important thing which was mentioned, but I want you to have direct first-hand knowledge of it. This is available in the school, but I would especially like to, you know, refresh in your minds and show it to you. What are the IA schools essentials of character building? Now, before I come to that, I would like to connect this day to whatever we did yesterday. So you got to know many things about IA schools yesterday. Please let me know in the chat box which one you like the most about IA schools. आपको कल के सेशन में हमने बात की कि IA schools किस तरह से मुनफरिद हैं और मुख्तलिफ हैं, तो ज़रा हमें चैट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सी चीज़ उसमें से सबसे बेहतर लगी और मुनफरिद लगी और किस तरह से आप समझते हैं कि IAUI स्कूल्स जो हैं बाकी स्कूलों से इंस्टीट्यूशन से मुख्तलिफ हैं। तो जी, इस्लामिक करिकुलम है, एथिकल करेक्टरिस्टिक्स, जी ठीक हो गया, सिटीजनशिप करिकुलम है, कैंटन सिस्टम डॉक्टर आयशा बता रही हैं, IAUI प्लेज एंड कैंटन, ये आईफोन आईडी इनका नाम नहीं आ रहा, टीचर सौलत कह रही हैं, दे फोकस ऑन क्रिएटिविटी रादर देन क्रैमिंग. Thank you for bringing up this point. I'm so happy that you have noticed, and I would be very happy if all teachers believe in it. In some of our schools, namaz is also, they must all learn namaz, but offering prayer at school is actually not advisable. However, if students are doing that, it's wonderful. Our pledge and anthem is different. Public speaking, yes. Parliament system, yeah, teacher Munazza Murtaza is rightly, yeah, parliament system, we take pleasure in it. You must form a parliament school, parliament, citizenship curriculum, Islamic values, Arabic language, school anthem is so heart touching. Yeah, it is. And citizenship curriculum, okay, this is Farzana Kanis and Ms. Sana Atiq was talking about the wonderful. So yeah, these were the things we did yesterday. And I understand. So, okay. Let's have the एक तो अटेंडेंस लिंक हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है ना जी, तो साथ साथ अटेंडेंस भी मार्क कीजिए. लेट्स नाउ मूव फॉरवर्ड टू द ओरिएंटेशन ऑफ आईए स्कूल्स बुक लिस्ट. Sorry, I'll come to that, but I said before that I want to discuss with you and show you the essentials of character building. So this document, this is a 2-page handout, our policy and document, which is very important and dear to us. And I want teachers to not only keep a copy of it, display it in the classroom, so that yeah, great to have more ideas coming up. But अब मेरी ख्वाहिश ये है कि आप सारे ज़रा फोकस कीजिए स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, essentials of character building. So the 6 of them जो हम चाहते हैं कि आइए स्कूल्स में जब बच्चा हमारे पास आए और वो जितने साल हमारे पास रहे, अगर वो रिसेप्शन से लेके ग्रेड 10 तक रहता है तो इमेजिन ही विल बी स्टेइंग 13 years विद अस, और अगर वो FA-FSC भी करता है तो 15 years विद अस. तो इस दरमियान में कम से कम ये चीज़ें हमें बच्चे के अंदर उसकी शख्सियत का हिस्सा बनानी है. तो इसलिए ये आपकी शख्सियत का भी हिस्सा होनी चाहिए, टीचर्स की शख्सियत का हिस्सा होनी चाहिए कि टीचर्स को पता हो कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू इनकलकेट इन आवर स्टूडेंट्स. सो आई वुड लाइक you to, some of you to come forward, read it out for me and read it out for others also. I'm sure you can see it from the screen. तो अगर आप में से कोई पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा कि हम इसको उसके साथ साथ डिस्कस करते जाएं. जी, so come forward, participate, get yourself acknowledged. और मुझे साथ ये भी ज़रूर बताएं
कि have you got it in your school? Have you seen it earlier? अभी तक आपने जी So, teacher Afshin Nawaz, would you like to read it for us? Is the screen clear to you? Oh, okay. I'm so sorry. Just a minute. Let me check out what is the problem. Why? That's what I was thinking. Why people are not. By the way, you can raise hand in the Zoom. That will make me understand that you're there and you want to talk. Okay. Now you all can unmute yourself. Okay, teacher, go ahead. May I? Yeah, sure, please. At IIUI school, I learned the essential of character building. First one is at IIUI school, I learned to be respectful and promise to treat others with respect and practice good manners with them. Be understanding and appreciative of the So, differences dear among teacher, my. या वी विल कीप इट एक कॉन्वर्सेशनल डिस्कशन स्टाइल आप पढ़ते भी जाइएगा एंड आई विल कमेंट तो अगर हमने क्लासेस में ये लगाया हो और आपका बच्चा जरा सा भी आपको लगे डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है आपके साथ तो उसको इशारा कीजिए कि बेटे ये देखो इट्स देयर यू हैव प्रॉमिस्ड उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन कर लीजिए ठीक है जी प्लीज गो अहेड All right. Be understanding and appreciative of the differences among my fellow human beings. Show consideration in all my acts, never impinging on the rights of others. Learn to communicate my emotions in a positive manner and be an agent of effective change. सो वी वांट जाहिर है छोटे बच्चों को आहिस्ता 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 ये करवाएंगे बट बाय द टाइम जब ये बच्चे स्कूल से निकलें तो आज सुबह आपको एक बड़ी दिलचस्प आज हमारे लीडर्स की कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी सारे प्रिंसिपल्स कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ सुबह मॉर्निंग में तो आप सोचें अभी हमने शायद आप लोगों के इल्म में हो अभी एक माह हमने आई स्कूल्स ग्रीन वर्ल्ड इनिशिएटिव रन किया हुआ था जिसमें प्लांटेशन की पूरे पाकिस्तान में हमारे स्कूलों ने तो 25,000 से ज्यादा दरख्त लगाए तो वो मुझे एक प्रिंसिपल बता रही थी कि हमारे एक बच्चे ने उसको इतना शौक पैदा हो गया कि वो अपने गांव गया और उसने 100 पेरेंट्स के साथ मिलकर 100 ट्रीज वर प्लांटेड तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ये बच्चों में आप ये चीजें इस तरह से ढाल डाल दें कि ये इनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाए और जब ये मुआशरे में जाएं तो हमसे कम अज कम बेहतर हों आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट डियर टीचर्स वी वांट देम टू बी बेटर देन अस कि जो हमें ना पाकिस्तान का ख्याल है ना अपने इमोशंस पॉजिटिव हर वक्त नेगेटिविटी आप जरा गुफ्तगू शुरू करें लोग कहेंगे पाकिस्तान में तो ये भी मसला है ये भी है ये भी है ये भी है और मैं हैरान होता हूं जब पढ़े लिखे मेरे और आपके जैसे लोग कि जिस मुल्क ने हमें एजुकेशन दी आप मैट्रिक से ऊपर हैं आप एफएससी से ऊपर हैं आप ग्रेजुएशन से ऊपर हैं आप मास्टर्स से भी ऊपर हैं बाज ने आप में से एमफिल किया होगा आपने डॉक्टरेट किया होगा फिर आपको जॉब भी मिल गई है और इल्म होना ही बहुत बड़ी एक आपके लिए नेमत है लेकिन पीपल टॉक सो मच नेगेटिविटी अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री तो इसको हम सब ने मिलकर अपने इन बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविज्म पॉजिटिव मैनर हर चीज में पॉजिटिविटी और अपने इमोशंस को भी इवन इफ दी एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस वी नीड टू कम अप विद द राइट वे ऑफ कन्वेइंग आवर इमोशंस जी जी थैंक यू टीचर प्लीज गो ऑन At IIUI school, I learned to be responsible and promise to remain answerable to myself for whatever I do. Admit the please mistake I made. yeah wonderful the most beautiful thing you see answerable to myself self accountability yeah Admit the mistake I make, apologize for them, and learn from them. Accomplish each task assigned to me with complete devotion and on time. Be self-disciplined and execute all duties without any reminder. सो ये सी आप इसलिए मैं कहता हूँ इसको क्लासेस में लगा दें ये बच्चों के साथ एग्रीमेंट साइन कर लें उन्हें कि बेटे आपने ये प्रॉमिस किया है
और कितनी खूबसूरत बात है कि मिस्टेक्स आई मेक अपोलोजाइज फॉर दैम। और हमारे यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है, वी थिंक कि नहीं हम तो गलती करते ही नहीं है। आई हैव इवन सीन पीपल एडवाइजिंग पीपल कि ओ डोंट एक्सेप्ट योर मिस्टेक, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो लेट्स गो बियॉन्ड this wrong education, incorrect input. Okay, so G, yeah, who would like to read further? Be honest and fair in all my dealings. Always keep my word when I promise something and fulfill it in its true spirit. Be loyal and sincere to my family, friends, country, and school. Live up to the trust imposed in me. Wonderful. So the third one is to be trustworthy, right? And we are making our youth, our younger generation trustworthy. जी, टीचर मुकद्दस गालिबन आप कुछ कहना चाह रही हैं या आप पढ़ना चाह रही हैं, बताइए। Avoid blaming and taking advantages of others. अच्छा, ये गालिबन इन्होंने पढ़ा है, लेकिन हमें वो सारा शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। आई लर्न टू बी फेयर। और फेयर क्या होता है? लिव बाय रूल्स, जो हमारे मजहब ने, स्कूल ने, घरों पे, इंटेलेक्ट एंड मटेरियल पोजेशंस, रिस्पेक्ट, टेकिंग, सो ये सारी चीजें भी। एंड नंबर 5, जी मेरा ख्याल है टीचर सौलत को उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं। जी Sure, sir, why not? At IIUI school, I learned to be caring and promise to be kind and compassionate and show empathy in all my dealings, forgive others as much as possible, help all those who are in need, and be considerate to all. Think carefully how my actions can affect others. So do you see how beautiful these words are? और कितना खूबसूरत बच्चे के लिए एक उसकी शख्सियत को मोल्ड करने के लिए कि एम्पैथी हो उसके अंदर, the pain he should feel for himself जो दूसरों को हो रही हो। And this last one, an extremely important one for this country, society, and for all of us. जी At IIUI school, I learned to be conscientious citizen and promise to be a law-abiding citizen and uphold the rules and laws laid down by my school, home, and country. Negotiate, decide, and take part in citizenship action plans to make my community, my country, and the lives of my fellow citizens better. Remain aware of everything that is happening around and beyond me. Be a good neighbor, respect the authority of my elders, family, and school, make effective efforts to improve the environment. So you see, we are making our children understand right from the beginning कि abiding citizens, law abiding citizen होना चाहिए हमें, uphold the rules। इसीलिए एक टाई लगा के पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी से निकल के ग्रेजुएट या मास्टर्स या डॉक्टर, वो भी जब गाड़ी पे बैठा हुआ इशारा तोड़ता है, तो आप मुझे बताइए कि हमारी सारी एजुकेशन स्कूलिंग कहाँ गई? अगर मैं यहाँ पर बैठ के आप सबके साथ ये बात कर रहा हूँ और बाहर निकलते ही कूड़ा जमीन पर फेंक रहा हूँ, और अगर मैं किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा, और अगर मैं सड़क के बिल्कुल दरमियान में चल रहा हूँ, और अगर मैं गलत जगह से क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें फिर मेरी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह मुल्क की तरक्की में और अपने इर्द गिर्द के माहौल में उसमें तब्दीली लाने के लिए काम करना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने प्लांटेशन की अक्रॉस पाकिस्तान, इसी तरह चैरिटी के प्रोजेक्ट्स किए हैं अक्रॉस पाकिस्तान। और देखिए फिर आखिर में रिस्पेक्ट द अथॉरिटी ऑफ माय एल्डर्स, फैमिली, स्कूल। तो जब आप डिसीजन लेंगे, बच्चे को पता होगा कि हमारे स्कूल के टीचर्स के डिसीजंस जो हैं, आई नीड टू रिस्पेक्ट देम, और आई नीड टू इम्प्रूव एनवायरनमेंट अराउंड मी। तो ये चंद 6 हम इसको कहते हैं 6 essentials of our for the character building of our citizens, our IAUI school students। तो ये हमारे हर टीचर को चाहिए कि you should take it back to
द क्लासरूम्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा ख्याल था कि कल चूंकि इस पर बात हुई थी लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सका था। तो आइए अब चलते हैं जो असल हमारा आज का मौजू और टॉपिक है, उसकी ओरिएंटेशन की तरफ, कि हमारे पास कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आप सबके लिए अवेलेबल हैं। तो जस्ट गिव मी ए मिनट, मैं ज़रा अपनी स्क्रीन शेयरिंग, अच्छा जी, अच्छा आपकी 88 ऑफ यू हैव साइन, आपने अटेंडेंस मार्क की है। बाकी लोग भी कर लें क्योंकि 112 बैठे हुए हैं, तो आप सारे अटेंडेंस मार्क कर लें। आइए अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आज वो है हमारा आईए स्कूल्स का एकेडमिक रिसोर्स बैंक। अच्छा ये ज़रा देखिए स्क्रीन पर इस वक्त आपको, कैन यू सी दिस एकेडमिक रिसोर्स बैंक? आप सबको नज़र आ रहा है ये टैब? और ये Yes, sir. इसकी एक्सेस हमने हर स्कूल को दी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसके नाम से आईए स्कूल्स एकेडमिक रिसोर्स बैंक। आमतौर पे हम इसको एआरबी कॉल करते हैं, एआरबी, मतलब एक टर्म बनी हुई है सिस्टम में, हम खुद से इसको एआरबी। तो ये जो एआरबी है ये बहुत कीमती है और ये आप सबके स्कूल्स के पास ऑफिशियल इसकी एक्सेस है, राइट। अच्छा अब ये इसमें है क्या, आइए तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। इसके अंदर फर्दर देयर लॉट्स ऑफ फोल्डर्स इनसाइड इट जो आपके बेनिफिट के लिए, ये देखिए, स्टार्टिंग विद द आईए स्कूल्स बुक लिस्ट, आईए स्कूल्स करिकुलम्स, टीचर गाइड्स, फिर कुछ बुक्स हैं, कुछ समर पैक्स हैं, फिर हमारे जो एनसी के पेपर्स बनते हैं उसके हर पिछले वाले सैंपल्स इसमें सारे अपलोड कर दिए जाते हैं। फिर हमारी बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज भी हैं कुछ किताबों की। टीचर्स रिसोर्स बैंक, टीचर्स के खुद सीखने के लिए किताबें और रीडिंग का बेहतरीन मटेरियल है। टेक्स्ट बुक्स के चैप्टर्स हैं, और सो ये सारे मटेरियल आपके यहाँ पर मौजूद है। कुछ चीज़ें आपकी हेड्स के लिए जाहिर है, आइए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप नहीं बैठे नहीं रहे कि स्कूल ने नहीं दिए तो आपको भी नहीं पता, और आप बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है या आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। पहले मैं ज़रा क्विकली सिर्फ आपको एक दफ़ा बुक लिस्ट हमारी जो है, दो होती हैं हमारी साल में, एक ही बुक लिस्ट है, लेकिन समर जोन और विंटर जोन का चूंकि टाइम थोड़ा सा फ़र्क है तो बुनियादी तौर पे इसलिए, तो आइए ये समर जोन, आइए स्कूल्स बुक लिस्ट 2024-25 समर जोन जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी बुक लिस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का वाहिद स्कूल है, और मैं ये चाहता हूँ हमारे सारे स्कूल भी इसका ख्याल रखें कि हम कोशिश ये करते हैं कोई पेरेंट्स की भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। कमर्शियल स्कूल बने हुए हैं, पेरेंट्स से बेहंगम पैसे ले रहे हैं, बेतुकी बुक्स उनको दी जा रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि मिनिमल किताबें खरीदवाई जाएं जिनकी सिर्फ ज़रूरत हो। तो ये बुक लिस्ट में अगर आप अर्ली ईयर्स की क्लासेस देखें, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बाज़ हमारे स्कूल और टीचर इस बात को नहीं समझते, और किताबें लगाने के चक्करों में पेरेंट्स पे बर्डन को बढ़ा देते हैं। अब देखें, रिसेप्शन में छोटा सा बच्चा आपके पास आता है तो हमने बिल्कुल एक छोटी सी बनी मैथमेटिक्स वर्कबुक है, उर्दू की एक मेरी पहचान इब्तदाई कायदा सा है, जॉयफुल किडी एक उसकी कलरिंग की बुक है, और कुरानिक स्टडीज एक छोटा सा रीडर है, वो भी जस्ट उसको शौक दिलवाने के लिए, और कुछ कॉपीज पूरे साल के लिए, पर इट्स मोस्टली प्ले मटेरियल है। फिर इसके नीचे इंस्ट्रक्शंस देखें कि इतने छोटे बच्चे को वी डोंट वांट कि टीचर उसे फोर्स करें। कल हमारी एक हेड जो कह रही थी कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब पेरेंट ये चाहता है कि बच्चा अभी रिसेप्शन में आया है और ये जो है वो आइंस्टाइन बन जाए, तो
प्लीज उस पेरेंट को भी आपने गाइड करना है कि खुदारा अभी इसके साथ ये जुल्म ना करें। एक दिन एक मदर की मुझे कॉल आई, आपके यहाँ ये नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे, फलां करवा रहे हैं। मैंने कहा जी ऐसे सारे काम गवर्नमेंट स्कूल्स में करवाते हैं, हम नहीं करवाते। तो फिर मुझे कहे आप क्या करवाते हैं? मैंने कहा जी हम तो चाहते हैं बच्चा सोचने समझने के काबिल हो, क्रिएटिवली खुद काम करे, चीजें बनाए, उनके बारे में सोचे। तो इस तरह से हमें उन्हें कायल करने की जरूरत है। तो जैसे रिसेप्शन में मुझे हैरत होती है जब टीचर्स भी कह रहे होते हैं कि सर हम स्ट्रक्चर्ड राइटिंग क्यों नहीं करवा रहे। भाई आप खुदा के लिए थोड़ा सा चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़िए, ताकि आपको अंदाजा हो कि किस स्टेज पर किस एज में क्या काम करवाना चाहिए। फिर इसी तरह रिसेप्शन 1 में जो हमारी बुक्स हैं, जॉली फॉनिक्स के रीडर्स हैं। जी, सो दी जरा काइंडली ये somebody प्लीज फैसिलिटेट अस इन दी चैट बॉक्स। जिन जिन को अटेंडेंस की रिक्वेस्ट बार बार करें आप लोग जरा डालते जाइए। आई थिंक देयर आर ऑलरेडी टीचर्स हेल्पिंग मी, जज़ाकल्लाह। तो इसी तरह फिर थोड़ी सी बुक्स बढ़ जाती हैं। फिर जब आप रिसेप्शन 2 में जाते हैं थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं। तो हल्का हल्का सा बच्चे को इट शुड बी अ मोर ऑफ, ये उसके प्ले ईयर्स हैं। देखें ये असल में इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को कि भाई पेरेंट्स ने काम करना है तो बच्चों को स्कूल छोड़ दो। अब हमने उन्हें धड़ाधड़ जो है बच्चों को इस बचपन की इस उम्र से उनके जहनों को उस पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। तो उनको प्ले प्ले में सिखाइए। फिर आपका ग्रेड 1 अब नंबर ऑफ बुक्स बढ़ रहा है और हमारी किताबें आपको पता है इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज ट्री है, इंग्लिश में मैथमेटिक्स जर्नी थ्रू मैथ्स है, और हम इस पे काम भी करते रहते हैं जो भी बुक्स अपडेट होती हैं। फिर ग्रेड 2 में इसी तरह हैं। तो ये किताबें बुक्स कॉपीज रिकमेंडेड हैं। और एक सिस्टम के अंदर प्लीज़ आप इस तरह की अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करें कि ये नहीं है, वो नहीं है, फला नहीं है। आप उसकी लॉजिक पूछिए। बाजू का एक एक शख्स सोच रहा होता है कि मेरे जहन से जो मेरे जहन में आ गया ना वो बेस्ट अप्रोच है। ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, हदीस से जो बता रही हैं कि नबी करीम भी यही कहते हैं। तो असल में आ, हमारे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, चाइल्ड साइकोलॉजी के, बहुत सी चीज़ों के। उस पे बेस करके फिर आपने ये भी बैलेंस करना होता है कि बच्चा इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, इतनी चीज़ें पढ़ रहा है, उस पर पहले ही बड़ा बर्डन है। आप ऊपर से कहते नहीं जी और कॉपी लगा दें और बुक लगा दें। अब जैसे हमने देखिए यहाँ पे ग्रेड 2 तक देर आर नो नोटबुक्स। जनरल नॉलेज के लिए नोटबुक की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे पढ़ाइए। ग्रेड 2 तक हमारे फॉर्मल एग्जाम ही नहीं है। इसी तरह साइंस, आईसीटी, अरेबिक, स्पोकन, सिटीजनशिप इन ग्रेड 2 की हम कहते हैं डोंट हैव बुक्स, कॉपीज, नोटबुक्स। उनको शीट्स पे काम करवा लें अगर ज्यादा देना है, या एक ही सिर्फ कॉपी रख लें, एक रफ क्या रफ तो नहीं, मतलब एक सॉर्ट ऑफ लूज शीट्स। कितनी कॉपियां देंगे आप इतने छोटे बच्चे को, आप बताइए। तो इन ग्रेड्स में ज्यादा राइटिंग करवाएं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स में, लैंग्वेजेस में, उसमें करवाइए आप। तो बच्चे को वो गधे पर किताबें लादने वाला काम ना कीजिए प्लीज। ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें इंसान ही रहने दीजिए, और ये खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। तो शीट्स पे भी काम हो सकता है थोड़ा। फिर बाजुकात क्या होता है, टीचर ने पूरे साल में 5 सफ़ों पे काम करवाती हैं, बाकी कॉपी खाली। और यूं ज़िया भी करते हैं हम, रिसोर्सेज का ज़िया, अल्लाह की दी हुई नेमतों का, वालिदैन के पैसों का, बच्चों की कॉपियों का। अच्छा फिर ग्रेड 3 में थोड़ा सा और आहिस्ता सा। अच्छा ग्रेड 3 से हमारे, आप सबको पता है एग्जाम शुरू हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह जिस दिन आपकी असेसमेंट पॉलिसी पे हमारी स्पीकर बात करेंगी मुनज़्ज़ा मुर्तज़ा, तो वो आपको बताएंगी कि हमारी असेसमेंट एग्जामिनेशन पॉलिसीज क्या हैं। तो बहरहाल, तो ग्रेड 3 से फिर एग्जाम का शुरू हो जाता है। लेकिन ग्रेड 3 में भी आईसीटी, अरेबिक, स्पोकन और सिटीजनशिप की कॉपी नहीं है। अब आप कहेंगे कॉपी नहीं है तो कैसे पढ़ाना है? तो भाई ये करने वाले काम है, पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। ठीक है, तो कभी जरूरत पड़े तो कुछ शीट्स पे काम करवा लें। अच्छा जी, ग्रेड 4 में
अब सिर्फ रह गई स्पोकन अरबिक और सिटीजनशिप की कॉपी नहीं है। तो ग्रेड 4 में यानी तो ग्रेजुअली बढ़ रही हैं कॉपियां उनके ऊपर। तो ये हमने नीचे नोट्स इसलिए लिखे हुए हैं कि टीचर फिर भी लगवा देते थे। तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिए, इस फिलॉसफी को समझिए, बच्चे के ऊपर जो वजन है, बर्डन है, उसको समझिए। तो ये पूरी हमारी इंटरनेशनल, पूरी दुनिया, पाकिस्तान की बेहतरीन किताबें और बाकी दुनिया में, जैसे ग्रेड 6 में देखें हमने एक तो न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स डी सीरीज है। साइंस में पियर्सन की एक्सप्लोरिंग साइंस इंटरनेशनल बुक लगी हुई है। ऐसी खूबसूरत किताब है, पावरफुल, और उसमें सारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बच्चे को इंटरेस्ट के साथ, शौक के साथ, वो ट्रेडिशनल पुराने तरीके से नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन के साथ 6, 7, 8 में साइंस पढ़ाइए कि कोई हमारे पास भी अच्छे साइंटिस्ट पैदा हों, बजाय इसके कि वो साइंस से भाग ही जाएं बच्चे। तो ये है जी हमारी बुक लिस्ट। ये हर साल अपडेट होती हैं। हाँ, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, हेड ऑफिस भिजवा सकते हैं स्कूल के ज़रिए। अगर आपको कोई अच्छी बुक्स आपको नज़र आती हैं, कोई मसाइल नज़र आते हैं, कोई चैलेंज नज़र आता है, तो आप अपनी राय हमें ज़रूर भिजवाइए और पहले जानने की कोशिश कीजिए। बाजुकात राय से भी पहले ज़रूरी ये होता है कि आपको अंदाज़ा हो कि आया इसकी ज़रूरत है, नहीं है, फिर आप उसके हवाले से हमें अपनी राय ज़रूर भिजवाइए। तो ये थी जी बुक लिस्ट। इसी तरह विंटर जोन की भी है। और अब आइए वापस हम चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे दी अच्छा जी, ये थी बुक लिस्ट। अब आ गए करिकुलम्स और ब्रेकअप्स पर। तो ये फोल्डर देखिए, ये देखिए जरा ग्रेड वाइज। सॉरी, मैं इसको, ये रिसेप्शन ग्रेड से लेके रिसेप्शन 1, रिसेप्शन 2, सिटीजनशिप का करिकुलम, ये असल में इकट्ठे बने हुए हैं मुख्तलिफ सारे ग्रेड्स के। ग्रेड 1, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये सारे ग्रेड्स आप देखते जा रहे हैं। तो अब जैसे देखिए, ये कोई लिख रहा है कि देयर शुड बी अ वर्कबुक फॉर साइंस फॉर ऑब्जेक्टिव एज द बुक डजंट हैव एनी ऑब्जेक्टिव टाइप्स। तो अगेन प्लीज नोट कीजिए, साइंस जो है ना, ये भी बहुत ज्यादा वर्कबुक्स और इस तरह और लिखवाने की का सब्जेक्ट नहीं है। मुझे देखें, मुझे अरबी वाला कहता है उसकी भी वर्कबुक लगा दें, उर्दू वाला कहता है उसकी भी वर्कबुक लगा दें, जनरल नॉलेज वाला कहता है उसकी भी वर्कबुक लगा दें, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला। भाई क्यों लगा दें, कितना पढ़ाएंगे बच्चों को। आप खुद थोड़ी सी एक्टिविटीज बनाइए, ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को करवाइए। आजकल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। एनीवेज, तो बहरहाल ये सजेशंस आप बाद में लिख कर हमें भिजवाइए। अगर कोई ऐसी क्रेडिबल सिचुएशन हो, सिर्फ कह देने से जाहिर है एक चीज। तो ये देखें, अब हम आपको दिखा रहा हूं मैं फोल्डर के अंदर। जैसे ये ग्रेड 1 है, तो उसमें बच्चों के लिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, हर सब्जेक्ट का करिकुलम मौजूद है यहाँ पे। आपको साइंस का ये देखें, साइंस की बुक नहीं लगी हुई, तो साइंस का करिकुलम है। और इस करिकुलम में ये देखें, ये पूरा आपको डिटेल मिलेगी। ये देखें, वीक 1 में क्या पढ़ाना है, टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटी क्या करवानी है, राइम्स क्या हैं, पोइम्स उसमें, उसकी वर्कशीट, प्लानिंग सेंटर, हर चीज देखें। ये पूरी प्लानिंग हुई हुई है। और ये देखें आगे, एवरीथिंग इज रिटन देयर। कैसे सवाल पूछो बच्चे से, क्या बातें करो, डिस्कस क्या करो उनके साथ, एक्टिविटी क्या करवाओ, पोएम कैसे उसके साथ पढ़ो। यानी आपको कहीं और जाके, हाँ, आपका अगर माइंड क्रिएटिव है, आप इससे बेहतर कुछ सोचना चाहते हैं, आप जरूर सोचिए, आप उस पर काम कीजिए। तो 15-16 के बाद अपडेट क्यों नहीं? नहीं, उसमें अपडेट आप करें ना साथ साथ। देखिए, लेसन प्लानिंग का असल मकसद ये होता है, आपको एक जनरल फ्रेमवर्क दे दिया गया है। अब आप उस आपको लगता है ये मेथड अब पुराना है, आप कोई और अच्छा सा नया यूज कर लीजिए। ठीक है। सो जी, ये सारी आप इसको इसी तरह से
अच्छा, जो बुक्स चेंज होती हैं जिन लेवल्स के ऊपर, उसके साथ साथ नए करिकुलम्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। मसलन अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में, इसी वीक के अंदर या कमिंग वीक में, जनरल नॉलेज की किताबों में जो तब्दीलियां आई हैं वो इसमें अपडेट करना शुरू कर देंगे। वो आ गए हैं बन के, एंड मीरपुर कैंपस हैज ग्रेटली हेल्प्ड अस फॉर दैट, तो आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक देम। तो ये देखिए, अच्छा इसी तरह जिन ग्रेड का, फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप करिकुलम जो है ये इकट्ठा बना हुआ है रिसेप्शन टू ग्रेड 8, तो वो ये इकट्ठा रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपके पास ये करिकुलम नहीं है तो अपनी हेड को कहिए प्लीज यहाँ से डाउनलोड करके आपको व्हाट्सएप करते हैं। आजकल व्हाट्सएप में आराम से आप ये रख सकती हैं, वहां से आप इसको कंसल्ट कर सकती हैं। और ये ग्रेड 1 लेट से देखते हैं, ये सारे करिकुलम आपके बने हुए, हर सब्जेक्ट के रखे हुए हैं। अगर आपको कहीं लगे कोई करिकुलम नहीं है, स्कूल को बताइए, वो हमें ईमेल करें। पहले असल में हमने एक्सेस दी हुई थी लोगों को, तो उन्होंने उसमें से कोई डिलीट कर देता था, कोई कट कर देता था। अभी हम ये ख़त्म कर रहे हैं, अब सिर्फ आप इसको कॉपी कर सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये देखिए, आर्ट का बड़ा मज़ेदार करिकुलम है, आर्ट का करिकुलम, फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम। अब मैं इसका लिंक आपके स्कूल में है टीचर, आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी के अंदर, तो वहां से स्कूल आपको डाउनलोड करके ये दे सकता है। ये देखिए, तो अब मैं देखता हूँ फिजिकल एजुकेशन का करिकुलम किसी स्कूल में इस्तेमाल ही नहीं हो रहा होता। टीचर बच्चों को बेतुकी, भाई गेम्स भी तरीके से खिलवाएं, कोई जिंदगी का काम किया जाए उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, बेहंगम काम कोई भी नहीं करना चाहिए। तो ये फिर आखिर में आपके ग्रेड 8 तक का सारे करिकुलम्स हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके बने हुए। एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा करिकुलम है, तो इसमें रखे हुए हैं। अरबिक का भी इंशाल्लाह हम अपडेट कर देंगे, उसमें भी चेंजेस आई हैं, जो नई बुक लगी है नेक्स्ट वीक में वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है जी हमारा आईओ स्कूल्स करिकुलम का पूरा बैंक, वी कॉल इट आईओ स्कूल्स रिसोर्स बैंक। उसके अंदर आपके ये करिकुलम्स, पहले बुक लिस्ट, फिर करिकुलम्स, फिर ये टीचर गाइड्स। अब ये देखिए, आपके तकरीबन हर सब्जेक्ट पे आपको, अच्छा करिकुलम बजाते खुद भी बहुत गाइड कर रहा होता है, फिर उसके अलावा टीचर गाइड्स भी हैं। प्लीज उन्हें कंसल्ट कीजिए, उनसे हेल्प लीजिए, वहां जाकर देखिए, ये देखिए कि वहां क्या आइडियाज दिए हुए हैं, कैसे पढ़ाना है। अपने आप को भी इम्प्रूव कीजिए। कुरानी करिकुलम की तो हर आपको इस तरह टीचर गाइड्स जो हैं वो, ये जैसे साइंस के अंदर खास तौर पे ये जो एक्सप्लोरिंग साइंस बुक है ये मुश्किल है, और इसकी ये देखें तीनों की टीचर गाइड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सो जी, आपका ब्रेकअप है करिकुलम, आप साइंस का जो कह रही हो पहले से मौजूद है, वहां से ले लीजिए। आपको मैंने अभी दिखाया है, मुझे जो भी ग्रेड आप बोलें आप उसमें देख सकती हैं, उसके अंदर है। तो ये है जी। नाउ कमिंग टू, ये बात हो रही थी, अच्छा छोटे बच्चों की जो मेरी पहचान बुक है उसका भी कैसे पढ़ानी है, उसका तरीकाकार क्या होगा, कलर, स्टोरी, लेटर, हरूफ तहज्जी, हर चीज का। ठीक है। अच्छा जी, टीचर गाइड्स हो गई, फिर ये बुक्स हैं, ये समर पैक्स, तो जाहिर भी इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। ये पेपर्स के सैंपल्स हैं, साइंस बुक्स की सॉफ्ट कॉपी है। अच्छा, टीचर्स के अपने पढ़ने के लिए भी इसमें किताबें रखी हुई हैं, बहुत जबरदस्त। खास तौर पे दो किताबें इसमें, ये असेंशियल टीचिंग स्किल हर टीचर को पढ़नी चाहिए, और लर्निंग थ्रू प्ले हर अर्ली ईयर्स टीचर को पढ़नी चाहिए। और अर्ली ईयर्स के छोटे बच्चों के लिए टेंशन को गाइड करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल कैसे और कब शुरू होना चाहिए, उस हवाले से। ठीक है जी। और टेक्स्ट बुक्स एंड दैट्स ऑल। ये था जी हमारा आइए स्कूल, और ये मैंने आपको, आप ये समझ लें कि इसमें हजारों के हिसाब से चीजें हैं, और यानी सैकड़ों के हिसाब से चीजें और हजारों सफ़े हैं। तो मैंने बस शॉर्टली आपको ओरिएंटेशन दे दिया, आपको ये बताने के लिए कि सारा रिसोर्सेज आइए स्कूल्स के एकेडमिक रिसोर्स बैंक में ऑनलाइन आपके स्कूलों के पास मौजूद है। आप इसको लें, इससे फ़ायदा उठाएं, और इससे सीखें, इसको पढ़ें, इसको इम्प्रूव करें। अगर कोई गलती नज़र आए हमें बताएं, कुछ बेहतर होने वाला है वो भी बताइए, और इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए।
तो ये था जी, इसके साथ ही मेरा सेशन पूरा हुआ। और अगर आपका कोई क्विक किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं अगले स्पीकर को हैंड ओवर करता हूँ जी। कोई कमेंट, सवाल, कोई बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी, अगर नहीं है तो हम इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शायद आप बात कर रही हूँ आईआईयू फालिया कैंपस से। जी सर, करिकुलम रिलेटेड बात तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मेरे माइंड में बात आई थी तो मैंने सोचा शेयर कर दूं जी। कि जैसे हमारा जब मैनुअल आया था उसमें होमवर्क पॉलिसी दी हुई है, हम्म। तो उसमें चूंकि हमारी बाद में इस्लामियात ऐड हुई है ग्रेड 6 to 7, मीन्स के हाँ पहले हम जब कुरानिक्स ले रहे थे, जी। तो सर वो अगर अपडेट कर दिया जाए। उसका ब्रेकअप तो हमने डाल दिया हुआ है, अभी आपने देखा नहीं उसके अंदर फोल्डर में, लेकिन मैं उसको दोबारा अ, चेक करवा लेता हूँ जी सर, बहुत शुक्रिया, जी। थैंक यू। और ठीक हो गया जी, गुड आइडिया। बाजू का इट्स गुड रिमाइंडर, आपने अच्छा हमें। तो आइए, अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारी अगली स्पीकर जो है सेशन की, वेरी फाइन पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक इंसाइट, soft spoken, great in taking initiatives, with a wonderful passion for learning. She is the principal of our International Islamic University Islamabad School's Morga campus, Dr. Majida Hassan, and it's a pleasure and honor to have her with us. She will speak on IOE School's curriculums, tools for excellence in teaching. जी, over to Dr. Saiba. Dr. Saiba, आप हैं ना हमारे साथ? Thank you very much, sir. जी Thank you very much for your kind words. It's an honor to contribute to the professional development of our new inductees. Welcome, teachers. And I hope through these training sessions, we will be able to contribute and to create meaningful learning experiences for our students. Sir, if you just let me share my जी जी, आई हैव screen. गिवन यू द राइट्स, आप आप कर सकती हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, so starting with my presentation, our presentation, the topic for today's presentation is International Islamic University Islamabad curriculums as tools for excellence in teaching. Now, a small introduction. My name is Dr. Majda. I am currently principal of IUI Morgan to doctor, as well I have done master's planning and management. I have taken all the good things out of my experiences. One thing which I like is that I have taught classes from grade 1 till the second thing which is related to today, and that is 3 years consecutive distinct. One was world of 160 countries. Now there is nothing special in me which I have done, but the main thing is the curriculum. The Cambridge curriculum was so detailed and so beautifully organized that I was a new teacher, and when I started that curriculum, I was really surprised that initially I didn't know how to teach, Cambridge curriculum. So one of my colleagues, she has introduced me to the website of the Cambridge, where all the curriculum was given, everything related to curriculum. So what I did was, because I was enthusiastic also, and I didn't know anything about it. So I studied and read that curriculum, from A to Z. All the resources, just like, Sir Kashif has mentioned, that hundreds of pages are there in the curriculum of IUI. Similarly, in Cambridge, a lot of websites are there. Even if when you start, I hope everybody can hear me.
I'm audible? Yes, you are, Dr. Hello? Go ahead, please. Okay, okay. So I read, all the links which are given in that curriculum, the resources which are given. I have used those resources. I have seen the paper pattern of the Cambridge, then how they check the paper and how the marking is done. Then I have read all the marking schemes, that where are the the things where they deduct marks, and how they give marks to the students, and how the students get distinctions in different subjects. So by reading that curriculum and implementing it word to word in class, me get that success. And I was not even expecting, I have never thought of teaching. My curiosity was there, and I enjoyed, all that research which was done in that curriculum. The same thing goes in IUI curriculums, that if you, look at the curriculum, you will come to know that IUI also has put a lot of effort. The credit, I think, goes to Sir Kashif. Mashallah, he has managed it so well. If you look at the definition of the curriculum is basically enables students to acquire and develop the knowledge, the skills. If I just stop my video so that the thing will go well. Okay. So it will enable the student to acquire and develop the knowledge, skills, and values, and the associated capabilities and competencies to lead a meaningful and productive life. So what is the importance of curriculum in education? It basically standardizes the learning goals for an entire school and provides a clean path for the student to progress from one grade to another. Now, standardizing the learning goals is a very important thing. If the teachers, most of the schools have female staff, and female teachers have, their own lives, and sometimes such sort of problem arise that they have to leave their job, sometimes in between the sessions, sometimes just before the exams. So it creates a lot of chaos, in the educational or in the learning procedure. So if you are following a curriculum and, all the points given in the curriculum, you are following it, you have broken up the syllabus in the proper way, the way it is given in the curriculum, then it does not matter one teacher is teaching or the two new teachers have joined, because they will, start from the point where the previous teacher has left. So through the breakup, and through the lesson plans, how many things have covered, how many worksheets we have done. So in this way, you can easily standardize the procedure, and the effect will not come on the students' learning. As far as the curriculum design is concerned, the key principle of an effective curriculum design is goal-oriented. All the curriculums, they have they start with an objective, that when I'm going to a class, which objective I'm going to achieve, and what is its relevance with that grade, whether it is an efficient, topic, the curriculum is flexible, the continuity in different grades. The achievement, the students, if she has achieved one thing in one grade, then the continuation of the same skill or the expertise should continue. Then there is a balance, between the subjects. Integrated studies are there in curriculum. Doing integration in different subjects is a very difficult task, and we were given a lot of training for curriculum integration. So curriculum integration means even one subject, one topic you were taught in science, for example, photosynthesis, how the food is made, and then in some other subject, something related to digestion is there, and in other something related to growth is there. So you are going to integrate all the three subjects at the same time. In one subject you will give the knowledge, in the other subject you will go for the activity, in the third subject you will arrange some event or some physical work related to that.
So in this way, in a very enjoyable way, the student is going to learn the same subject in 3 to 4 different ways. And quality, matters a lot. The quality of the curriculum defines a school. If you are going to a school, a system, you will see that they have got very strong curriculums. One quality of IUI, which I have seen because I have joined also last year, and I got the chance of, reading the curriculum in detail. And I realized that a lot of quality is there. Very quality work, very international. It is, affiliated with international universities. So all the international standards were met in that curriculum. Then alignment with the educational standards. That is again a process of ensuring that the specified curriculum is consistent with enabling students to reach the milestones which are outlined, in that standards. So a curriculum which is aligned to the standard ensures the student have the opportunity. I think the speaker is still on. If you can please kindly mute your speakers. Dear that we teachers, can, please take care of listen your mics Okay. and kindly Thank listen. Yeah. So these students, you will give, if the curriculum is aligned to the standards, then it will ensure that the students have the opportunity to access the content and the skill outlined. I mean, it is not only the knowledge which we are giving, it is basically the skills which we are developing in a curriculum. So the tools for the curriculum development has 6 steps. First, we assess the educational needs of a particular grade. Then the step 2 is formulating the objectives and the learning goals. Then in the third step, we will go for the careful selection of learning experiences and choosing the rich content for teaching. Then we integrate these experiences with the relevant content for effective teaching. And then the last of all, but a very strong point is timely and accurate evaluation of the, above phases. That you should know when you are following a curriculum, you have to make your own daily lesson plan. Although the outline is given, but daily how you are going to select the activities or the plans and how you are going to, take it to the class, how you will implement it and how the students are going to see it, whether they are absorbing all those contents or not, because only you can assess, you can evaluate that the curriculum which was given to you, is it appropriate for the age and for the types of the students you have in your class. Then the technology role, this is the most important thing, technology role in curriculum. The digital learning platforms are there, interactive and adaptive learning tools are there. Then a lot of online resources are present through which you can, easily take help. As far as the curriculum implementation is concerned, the most important thing for implementing, Sir Kashif has designed these workshops in a very, gradual manner. That we have looked at the books, and then we will see the curriculums, that how the book, substance is given in the curriculum gradually, and then the teacher training is going side by side. So teacher should be trained enough to get the best use out of that curriculum. And for that, of course, the training is also needed and the professional development is also needed. There is a difference between the training and the professional development. The training is that you're learning something. Okay, you are going to do it in the class, the worksheet should be there, but the professional development is to manage the class and to manage the students' behavior and then take them alongside of the curriculum. That if the students are in a mood to do that, activity, if the students are understanding the basic, skill we want to instill into them, then there the professional development comes. And then in professional development, one thing again is very important, how we share our resources and how we help other teachers also. We take along integrated studies में the class teacher has to take along the subject teachers with her, and the subject teachers have to coordinate with the class teacher that how their subjects are same as the class teacher is teaching.
So why not to make something, together in which the children have more fun and the same knowledge will be, taught in a different way. Then comes classroom management strategies. Again, it's a very important thing that if you have a class of 25 to 30 students, so you should know their learning styles. And when you are implementing certain techniques in the class, alongside, you should evaluate your teachers. You should evaluate your teachers, and you should keep seeing that if the students are getting everything you are teaching them. Okay, then come the student engagement techniques. In student engagement, it's very important that your activities or your methodology should be engaging for all the students. It should not cater only 25% of the good students in the class, but it should cater to all the students, and you should evaluate by the end of the lesson. Every day you should evaluate your teaching and the learning process of the students. How many students have learned? How many students are still confused about the concept? And how you will, change your methodology, change your teaching method according to the learning style of those who did not get the concept. Then comes the challenges in curriculum development. Curriculum is, a straightway variety of ideas given to you. But the students which we are dealing with, which is the main, stakeholder, they have diverse learning needs. So it's not necessary that the method or the methodology given or the technique given in the curriculum for a particular subject suits your student. So here comes the importance of teachers' physical presence in the class, that he needs to understand that, okay, how I'm going to change this methodology into a different one, whether I will give the individual training, whether I will use some IT techniques, some audiovisual aids, or I have to, change the teaching aids according to the needs of the student. Then the resource limitations, sometimes, a lot of ideas are there, a lot of methodology is present, but you don't have the resources available. So the teacher should be creative enough. This is the professional development, that how you will change that idea and, alternate it with something similar, but, which is easily available. You can recycle, or instead of, creating problem for the parents, for the students, telling them over and over again to bring the things for the project, or, telling the directors or the school heads that we need, the materials. It's always better that we can, do one thing in 100 different ways. So we need to learn it and we need to research about it. Then comes the keeping the curriculum relevant. That is again very important. You have to pick and choose the activities which are relevant to your, needs, which are relevant to your students, and which are relevant to your community. That is, something really important. Then comes the types of curriculum. How many types of curriculum we have? I have, categorized the IUI school curriculums, that they are child or learner-centered curriculum. There are teacher-centered curriculum too, but IUI curriculums are basically learner-centered. And the basic, concept is to let the student talk, discuss, and contribute and participate in our teaching methodology. The second thing is it's a core curriculum. Core curriculum is something where we do not, concentrate on the subject knowledge, but we concentrate on the overall personality of a person. For example, core curriculum improves the grooming of a person, the mannerism, the physical appearance, and the way the child talks, the interpersonal skill, and multiple other, things are taken into consideration while they have, crafted this curriculum. Then it is a word explicit and or written curriculum. A word explicit means a thing which is in the hard copy form, which is in the written way, and each and every detail is given in writing. Then it is an integrated curriculum. Agar aap dekhoge to you will be surprised that the social studies and the citizenship
and science and maths. They have a lot of integrated activities if you study these curriculums in detail. There are subject centered curriculums, अलग subjects के भी हैं, but the way Sir Kashif has mentioned, you have a very good citizenship curriculum which is starting from grade 1 till 8, all the integrated activities are given. How we are going to groom a child of 5 to 8 years old, then 9 to 11 years old, then 15 years old, and those citizenship things with the grade or with the age bracket, the activities get gradually difficult and more relevant to that age group. Then it is an activity-centered curriculum. A lot of activities. I'm going to show you the curriculums one by one. जितने मुझसे हो सके during that time, I will show you those curriculums that a lot of activities are not only given, but all the procedures that how we are going to, what the things are needed, how much time is needed, how you are going to go about with that activity. Even if the message you have to post, it is written that you have to post the message a day before. So a very, teacher-friendly curriculums are there. Then they have catered the co and extracurricular activities too. Co-curricular activities are very important. For example, if we have a Defense Day sort of thing, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं, through the curriculum, we realized that Yawm Difa, Independence Day, flag painting activities, then certain songs, जो हमारा तराना है वो. So all these activities are interrelated. So why not we have a one event, quiz competition related to Pakistan. Then we have a literary society where essay competition related to Yawm Difa. एक debate है कि पाकिस्तान ने 70 साल में क्या खोया क्या पाया. So these co-curricular activities are all related to the curriculum which we are teaching in that month of August. तो हमने अपनी सारी co-curricular activities with the help of curriculum design की है, and along with that the extracurricular activities, you will be surprised the personality grooming, the mannerism which they have given कि हमने बच्चों में कैसे develop करना है, इखलाकियात जो अरबिक और कुरान का है वो कैसे develop करना है. उसके साथ साथ उन्होंने extra curriculum में भी बताया है कि हमने एक्स्ट्रा करिकुलम में जब बॉल फेंकनी है तो क्यू में कैसे खड़ा होना है, यानी हमने डिसिप्लिन को उसके अंदर वो किया है, इंप्लीकेट इंडल्ज किया है. क्यू में खड़े होके टर्न का कैसे वेट करना है, बॉल को हम छोटी सी बास्केट में कैसे फेंकेंगे व्हेन इट इज अ रिसेप्शन स्टूडेंट, इसको हम बास्केटबॉल में कैसे फेंकेंगे व्हेन इट इज इन स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 and 7. So I think very versatile, and I'm really impressed. I enjoyed thoroughly reading these curriculums. और मुझे चूँकि वैसे भी interest है, and I'm surprised that sir has found it out कि मुझे curriculums में interest है. So this first professional development thing sir has given me I think for the same reasons. Sir को कुछ पता चला. Then I'm going to show you. I hope. Is there any question related to the presentation? If you can open your mics and you can talk about. Hello. Teachers, go ahead. It will be nice. Anyone? Related to the curriculums. Yeah, basically, जो presentation है, it is related to the basic idea what curriculum is. अभी मैं आपको show करूँगी जो curriculums हमारे IUI में है. So related to curriculum, if somebody want to contribute something. Okay, there is a question for the new inductees. A teacher who is inexperienced, it is the first time that they are teaching in school and they are fresh graduates. Do you have any fear of, you are entering in the class for the first time, a class of 25 to 30 students. Do you have any fear of something? If you can write in the chat box, or you can discuss by unmuting yourself.
Kindly show it immensely. I hope I'm audible. Yes, Dr. Sabha, you are. Please continue. Okay. Okay. Now I will show you the different curriculums of IUI. We are starting with EY's, early years curriculum. The first curriculum which I want to show you is about the skill development. Now this curriculum, if you can see, it is for all grades. So we have to develop in English, we have to develop grammar, spelling, punctuation, syntax, vocabulary, questioning skill, analysis, evaluation, and you will be surprised when you will see an early year curriculum. We have developed the analysis skill. We have developed how to synthesize certain thing, organize. We have developed the you can say listening skills, speaking skills. So छोटे बच्चों में ये सारी skills, बड़ों में भी अपने अपने level, अपने अपने grade के लिहाज से. But we have, we can easily develop all these skills, comprehension skills in children from reception till higher grades. Then literature, poetry, language skills. अगर आप next देखें preschool में listening, speaking, reading, recognizing the numbers, letters and alphabet, phonetic awareness, matching, pairing, sorting. Now these things are very important. अगर आप from the very beginning छोटी क्लास से अगर आप ये मैचिंग, पेयरिंग, sorting कराना शुरू करें, creativity कराना शुरू करें, तो you will be surprised कि बच्चों में इतनी ज़्यादा thinking skills develop होती हैं. They explore and then they are able to analyze. Observe करते हैं, analyze करते हैं. In the later grades, they are able to write their own observation and they are able to create their own experiments. Maths में आप देखें सारी skills. आप even के questions when you are making a paper or when you're making a question, तो आपने इन skills को देखना है कि whether the child is ready for these skills. So आपकी assessment जो है ये skill based होनी चाहिए. यानी ये कोई hypothesis बनाने को दे दें, कोई observation एक लिखी हुई कोई आपने picture दिए हुए हैं, उससे related observation के what they think. Pictures should be interlinked. कि यहाँ पे क्या फॉर एग्जांपल जर्मिनेशन ऑफ सीड की है. सो प्लांट का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है. जर्मिनेशन ऑफ सीड है, वो पहले 2 पत्ते निकाल रहे हैं, फ्लावर निकाल रहे हैं. तो यू कैन जस्ट वन वर्ड आंसर हो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर. सो दैट दीज आर द ऑब्जर्वेशन स्किल विल बी टेस्टेड ऑफ द स्टूडेंट. एंड द सेम गोज रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग डाटा. आप सोचिए कलेक्टिंग डाटा हम बहुत छोटे बच्चों को कराते हैं कि हम उनको हैप्पी डाइट्स का कराते हैं कि वो लॉन में जाएं एंड दे आर गोइंग टू have a page in their hand and they are going to see कि उनको लॉन में क्या क्या चीजें मिले. एंड द सेम कलेक्टिंग डाटा स्टैटिस्टिक्स जो बड़ी क्लासेस में जाते हैं वहां पे भी हम यही स्किल यूज करते हैं. ओके, गोइंग टू द कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इज द इस्लामिक टीचिंग. ये भी जनरलाइज्ड है, कोर करिकुलम है कि जिसमें हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को देखते हैं कि हम एक अच्छा इंसान हमने कैसे बनाना है एक स्टूडेंट को. सो दीज आर इस्लामी तालीमात जो कि हमने बच्चों को देनी है. इस्लाम कैसे करते हैं, उसका जवाब कैसे देते हैं, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए उनका दीन का नाम क्या है, लिहाज क्या है. नीचे आप देखिए अखलाकियात पे दिया हुआ है इस्लाम की अहमियत. यानी अगर हम उनको सलाम करना बताते हैं तो उसके बाद हम उनको ये भी सिखाते हैं कि इस्लाम की अहमियत क्या है, सलाम का मतलब क्या है और क्यों सलाम जो है वो प्रेफर्ड है देन शेकिंग हैंड्स, देन सेइंग गुड मॉर्निंग, देन सेइंग हाय एंड हेलो. बिकॉज सलाम एक दुआ भी है. सलाम एक सलामती की दुआ है जो कि सलाम करने वाला और उसका जवाब देने वाला दोनों के लिए बराबर की होती है. Then going to the next सेक्शन का फर्स्ट टर्म अगर आप देखें तो दिस इज उर्दू का करिकुलम है जो डिफरेंट हम फर्स्ट से देख लेते हैं. पहला हफ्ता. अब आप इसमें देखिए कि हमने जब एक इस्लामी तालीमात को देखा उसमें हमने सलाम का बताया, सलाम के बारे में बात की. तो यहाँ पे हम हर्फ अलिफ की पहचान बता रहे हैं और अलिफ को रिलेट कर रहे हैं अल्लाह के साथ. ठीक है. और फिर अल्लाह के ज़ात की डिस्कशन, बच्चों के जहनों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना और फिर अपना तारुफ कि यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया और जो दुआ. तो आप देखें कि आपकी टीचिंग खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है. And if this curriculum is read by 3 teachers taking 3 different classes, their method of teaching will remain the same.
क्योंकि हमारा करिकुलम सेम है। सो हम टीचर की पर्सनल क्वालिटीज को नहीं देख रहे, बट हम टीचर्स को एक लाइन एक पैटर्न दे रहे हैं कि दिस यू आर गोइंग टू फॉलो। सो हर क्लास में सलाम की बात होगी, वालेकुम अस्सलाम की बात होगी, कंपैरिजन होगा ग्रीटिंग्स का फ्रॉम दी अदर ग्रीटिंग्स। जो हमारा फर्स्ट करिकुलम है अलिफ की पहचान बनाना, उससे रिलेटेड उसको भी हम अपने इस्लाम के साथ रिलेट करेंगे ताकि बच्चे बार बार उसको दोहराएं, और उसके बाद फिर हम करिकुलम भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इस्लाम, we are going to give exact knowledge of Urdu too. Then the next one will be resource of reception pack. हमने मतलब उनको एक resource दिया। अब आप ये देखें तो यहाँ पे a complete resource pack छोटे बच्चों का वर्कशीट्स दी हुई है कि बच्चों को आपने यानी उर्दू आपने उस तरह से पढ़ाई, लेकिन उसके अलावा इफ यू नीड अ रिसोर्स पैक तो आप देखेंगे कि आपने किस तरह से लाइंस का बनाना है, नुक्ते मिला के, यानी जेम चे हे पे आने से पहले हमने क्या करना है। अब जब डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सेक्शंस में ये चीज कराएंगी, एक टीचर चली भी गई, वो बे तक करा गई, हमें पता है आगे ते में ये होगा, ते में हमें ये पता है, हमें उस टीचर से पूछने की जरूरत नहीं, हमें पेरेंट्स से पूछने की जरूरत नहीं कि वो टीचर अचानक चली गई तो अब इनका क्या होगा। वी ऑलरेडी नो उन्होंने क्या कुछ किया, वी ऑलरेडी हैव डिसाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द सिलेबस। सो हमें जो है कोई ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है। ये सारा वो भी बहुत बड़ा रिसोर्स पैक है, लॉट ऑफ वर्कशीट्स आर देयर। देन कमिंग टू द इंग्लिश रिसेप्शन, छोटे बच्चों का है ये, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट द सेम जो कि हमारे सीनियर क्लासेस में। अब अगर आप इंग्लिश का देखें करिकुलम स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक okay, so this is the reception curriculum, English curriculum for reception. If you go to the second, तो English literacy overview for first, यानी फर्स्ट टर्म में हमारे बच्चे फर्स्ट और सेकेंड वीक में क्या करेंगे, दे विल गो फॉर द एस साउंड, उसके साथ लेटर गेम कौन सी होगी, वो स्ट्रॉ की पेंटिंग करेंगे, फिर साउंड पोएम क्या होगी, दिस पोएम इज अवेलेबल, ठीक है। असाइनमेंट वो पेंटिंग का नेल्सन हैंडराइटिंग में करेंगे और वर्कबुक 1 का पेज 2 करेंगे। असेसमेंट क्या करेंगे, सोर्टिंग होगी एस साउंड की थिंग्स की, यानी ऑल द थिंग्स स्टार्टिंग विद एस साउंड्स वी विल मिक्स इट विद द अदर लेटर्स एंड देन वी विल आस्क द स्टूडेंट यू हैव लर्नड दिस इज द लेटर एस, ये साउंड है, so you are going to sort out thing। अब वही जो मैंने आपको स्किल्स दिखाई थी इनिशियली कि हम बच्चों में छोटे लेवल से लेके हायर लेवल तक सॉर्टिंग आउट करना आप सिखाएंगे। हर बच्चे की अपनी लेवल की सॉर्ट आउट होगी। अगर आप ओ लेवल्स में जाएं, ए लेवल्स में जाएं, मैट्रिक में जाएं, वो और तरह से सॉर्टिंग करते हैं, चीज़ों को निकालना, इसमें मार्फा होते हैं, इसमें नकरा, कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस में, ग्रामर के, तो वो बेसिकली सॉर्ट आउट ही कर रहे होते हैं कि वो एक चीज को बड़ी मिक्स अप होती है, रैंडम चीजें पड़ी हुई होती हैं, यू सॉर्ट आउट द थिंग ऑफ योर चॉइस, यू सॉर्ट आउट द वोकैबुलरी ऑफ योर कंसर्न। फिर आपका टेक होम प्रोजेक्ट भी है जिसमें पेपर टावल बनेगा एंड इट गोज फॉर ऑल, थर्ड वीक, फोर्थ वीक से आपको कुछ भी मतलब आइडिया सोचने के लिए, यू जस्ट फॉलो दिस पैटर्न एंड द किड्स विल एंजॉय बिकॉज एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद नॉट ओनली दिस कि उन्होंने आपको प्रीव्यू दिया है ओवरऑल, बट दे हैव गिवन यू द डिटेल्स आल्सो, यानी आपका फर्स्ट 2 वीक्स जो हैं उसमें इंग्लिश के आपके 6 पीरियड्स हैं, दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द टॉपिक्स व्हिच यू आर कवरिंग इन दीस 6 पीरियड्स आर वेलकम टू द स्कूल एंड द लेटर साउंड एस, देन द साउंड शीट इज आल्सो गिवन, मटेरियल्स आर गिवन, लर्निंग आउटकम बच्चा सीखेगा, दे विल आइडेंटिफाई। अब वही स्किल्स हैं जो कि हमने वर्ड्स आपको बताए थे, जो हमने आपसे कहा कि आप उसकी असेसमेंट भी उन्हीं वर्ड्स के साथ करें, तो ये असेसमेंट है, दे विल आइडेंटिफाई अ न्यू लेटर साउंड, दे विल सॉर्ट द साउंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये एक्टिविटी कर चुके हैं, ठीक, एंड दे विल डिस्कस सेल्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रोनाउन मी, अपने आप को मी बुलाने के लिए किस तरह से करेंगे। सर्कल टाइम में एग्जैक्ट दिया हुआ है मोटिवेट द चिल्ड्रन। अब ये नहीं कि खाली आपको बता दिया कि मोटिवेट द चिल्ड्रन, दे हैव टोल्ड यू हाउ टू मोटिवेट द चिल्ड्रन। उर्दू में आप देखिए हमने अस्सलाम वालेकुम बोला, हमने उसकी मीनिंग बताए, अलिफ को हमने अल्लाह के साथ कोरिलेट किया, देन वी आर दीज आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड स्टडीज, यानी हम एक टॉपिक को सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी हो रही है, लेकिन स्किल्स सॉर्टिंग की ही है, स्किल्स जो है आइडेंटिफिकेशन की ही है, और वही चीज हम यहाँ करते हैं। एक्सचेंज मॉर्निंग ग्रीटिंग्स बाय सेइंग अस्सलाम वालेकुम,
Please, अगर if you can mute your these microphones. Exchange morning greetings by saying Assalamu alaikum, make the children feel comfortable, introduce yourself and student. अब उर्दू में भी आप देखें इंट्रोडक्शन चल रहा था, इंग्लिश में भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, देन स्कूल वॉक अप लेके जाएं, फिर उनको इंट्रोड्यूस कराएं, स्टोरी लाइन कराएं, देन लेटर फॉर्मेशन. उसी दिन एक लेटर भी आ गया, लेकिन हमने अपना स्टार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन से किया, अल्लाह के नाम से किया, और हमने इंटीग्रेट किया उस मैनरिज्म को भी कि जो हमने हमारा पार्ट है स्कूल के करिकुलम का. एंड देन कम्स लेटर फॉर्मेशन. उसके बाद अब एक्टिविटी टाइम है, देखें कि साउंड की गेम है, फिर साउंड की पोइम है, और फिर उसके बाद आप उसमें असेसमेंट, ये देखिए असाइनमेंट है, असाइनमेंट क्या देंगे, फोटो कॉपी उन्होंने बताया हुआ है, और फिर असेसमेंट भी है. पिंक टावर बिल्डिंग, लेट द चिल्ड्रन बिल्ड द टावर, सी हाउ टॉल दे कैन बिल्ड इन अ प्रॉपर मैनर. ये टॉल और शॉर्ट का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है. अब ये सारे वीक्स देखिए आप, इसमें एक एक चीज, असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, असेसमेंट्स भी दिए हैं. घर के लिए आप उनको इंजॉय, मतलब घर का एक जो आपने देना होता है टेक होम प्रोजेक्ट, जिसमें दे आल्सो फील गुड एंड द पेरेंट्स आल्सो नो द व्हाट दीस स्टूडेंट्स हैव लर्नड. नाउ कमिंग बैक टू द कुरान नाज़रा, साइंस का कुरान नाज़रा. अब कुरान नाज़रा भी सबके लिए जाहिर है एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेड्स के साथ अब ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं. सो इट इज़ फ्रॉम रिसेप्शन टिल ग्रेड 8, और उन्होंने हर चीज़ बताई हुई है कि नाज़रा में क्या पढ़ेंगे. उसमें हम नाज़रा जो हमने पढ़ा है उसके साथ ये लेटर्स हैं, कुरानिक लेटर्स हैं तजवीद के लिए. फिर सूरास कौन सी पढ़ेंगे, रिसेप्शन में हम सूरह फातिहा की ओपनिंग करेंगे, रिसेप्शन 1 में सूरह अल इखलास होगी, अल फलक 2 में होगी, एग्जैक्ट दिया है. देन कुरान की कौन सी इन्फॉर्मेशन देंगे, होली बुक्स का हम रिसेप्शन में बताएंगे, कुरान से वर्ड कुरान की मीनिंग हम रिसेप्शन 1 में बताएंगे. फिर इम्पॉर्टेंट इस्लामिक सप्लिकेशंस, जो दुआज हैं, जो इम्पोर्टेंट दुआज हैं, ताउस, तस्मिया, फर्स्ट कलमा, सेकंड कलमा, किस किस जगह पे हम उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, द मेथोडोलॉजी इज आल्सो गिवन. ठीक है. सो मतलब मुझे तो लगता है कि हमें ना आई कैन टीच more appropriately, more efficiently by reading the curriculum rather than thinking about it. Although I have a lot of experience, but even then मुझे लगता है कि मुझे इसको देख के लगता है कि जितनी इस पे एफर्ट हुई हुई है, जितनी इस पे रिसर्च हुई है, जितना ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल प्रोसीजर्स को के साथ ये रिलेट करता है, इवन मैं कितनी भी क्रिएटिविटी करूँ तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर मी. So it's I always think that curriculum को follow करना is always a good choice. Then comes art का curriculum. सर ने भी जिक्र किया कि हमारा आर्ट का करिकुलम इज वेरी गुड. रीसाइक्लिंग प्रोजेक्ट अगर आप शुरू से हम इसको देखें, मैं तो जब भी इसको खोलती हूँ मैं स्टार्टेड एंजॉयिंग. इसमें आप देखें कि शुरू में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आर्ट को आपने लेके कैसे चलना है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट्स इन करिकुलम, आर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और वो हमें क्या क्या सिखाता है. गाइडलाइंस दी हुई हैं, अटेनमेंट टारगेट्स दिए हुए हैं, लेसन प्लान्स दिए हुए हैं. अब ये आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को आप क्यों बताएंगे कि आर्ट बहुत ज़रूरी है. आर्ट से जो आप बच्चों में स्किल्स डेवलप करते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, इसको फिर कभी डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे डेवलप होती है, बट इट इज़ गिवन. रिसेप्शन 1 का आर्ट का अलग से अटेनमेंट टारगेट्स, ठीक है. रिस्पॉन्ड टू द आइडियाज. नाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि अगर आप कोई आर्ट का आइडिया देते हो तो kids they get very much interested in art ideas and they get involved and engaged immediately. So it is always better कि आप बच्चों को कोई आर्ट का आइडिया दें और उनकी क्रिएटिव राइटिंग को भी इम्प्रूव करें, इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करें, कि आप उनको बताएं कि आप इस आर्ट आइडिया को कैसे आप लेकर चलेंगे. सॉरी, और ये रिसेप्शन 2 का सारे का मेरा connection is not that stable, I think. Then comes PE curriculum. Again, I think I messed up something. Okay, let's go to the PE curriculum, which sir already has mentioned. मेरी toolbar खराब है.
Is it okay? If you come to this, sorry sir, कोई मेरा No, no, please मेरे go tools ना on. मेरा I टच thought से है no, कंप्यूटर it's तो perfectly. ये आगे Please पीछे go on. You have time. I thought there is some ओके voice issues. So नहीं नहीं वो मेरा थोड़ा सा वो है टच सिस्टम तो वो थोड़ा खराब कर रहा था ओके देन लेट्स गो फॉर द फॉर आवर पीई करिकुलम अब जो सर ने बात की थी कि पीई में भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैं भी बहुत सरप्राइज हुई थी व्हेन आई हैव गॉन थ्रू दिस करिकुलम सो आई वाज रियली सरप्राइज हाउ टू टीच स्टूडेंट्स बास्केटबॉल और छोटे बच्चों को कि दे हैव यूज्ड वो जो डस्टबिन वाली या वो एक सिंपल सी टोकरी होती है जिसमें हम अपना कागज वाले लिटर फेंकते हैं दे हैव यूज दैट और उन्होंने कहा कि आप एक छोटी सी कागज की बॉल बनाएं and just let the students target those baskets कि वो बास्केट को कैसे टारगेट करें और उसके अंदर डालें सो इसमें भी आप देखिए ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्क इन अ लाइन develop affiliation with the teacher learn upper body movements learn light lower body stretches so this is the physical exercise which is very good for the kids that आप देखो हमारे बच्चों को भी ना चलने फिरने की आदत नहीं है वॉक थोड़ी सी करेंगे थक जाते हैं बहुत अर्ली मॉर्निंग इनको एक्सरसाइज की आदत नहीं है so it is always better that whenever we give them a PE time, they should stretch their body. They should move their different joints, upper body movements, lower body movements. इनको पता हो. Along with that, they should go for the game time. उसमें हम उनकी team building spirit कर सकते हैं. Losing का आप देखोगे छोटे बच्चों को they love to win, but they don't want to lose. So that sort of quality is very important. We need to teach our students that it's okay to lose sometimes and losing is also interesting some way आपकी adaptability flexibility humble behavior यानी बहुत से हमारे अखलाकियात के जो curriculum है वो we can achieve our objectives by through these PE activities और इनमें ये सारे दिए हुए हैं have understanding of caution improving the reaction time practicing the gross motor movement और इसमें बहुत मजे की उन्होंने इवन वो बताया हुआ है गेम्स बताई हुई हैं छोटी क्लास के लिए भी और बड़ी क्लास के लिए भी देन कम्स साइंस का रिसेप्शन का करिकुलम ये छोटी क्लासेस का मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे एक्टिविटीज को उन्होंने बहुत एक्सप्लेन किया है अगर आप ये देखें कि लर्निंग आउटकम बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अचीव अंडरस्टैंड हाउ टू कीप देमसेल्व्स क्लीन अब यहाँ पे जो है उनको क्लीनिंग का 1 से 4 पीरियड के दौरान आप ईटिंग राइट का आप उनको बताओगे कि व्हाट इज द राइट थिंग टू ईट हाउ टू रीड द फूड लेबल्स होम प्रोजेक्ट क्या होगा एंड देन एक्टिविटी क्या होगी मिरर टूथब्रश ये सारी चीजें उनको बतानी है एंड देन जो एक्टिविटीज हम इनके साथ कराते हैं वी कैन इवन टेक दिस एक्टिविटीज फॉर आवर असेंबली फॉर आवर जो हमारे एनुअल प्रोग्राम्स होते हैं कि व्हाट वी हैव टॉट आवर किड्स तो हाइजीन क्लीनलीनेस के ऊपर दे कैन इजीली टॉक अबाउट व्हाट दे हैव डन मॉडलिंग क्ले के साथ चिकपीस के साथ उन्होंने कैसे गम्स बनाए उनको क्लीन किया तो उसमें फिर ये होता है कि चिल्ड्रन एंजॉय टॉकिंग अबाउट इट देन कम लेट्स गो फॉर ग्रेड 1 to 5 इसका हम अरबिक स्पोकन का कर लेते हैं बिकॉज इंग्लिश उर्दू का उनका ऐसा ही है जैसे कि हमारा छोटी क्लासेस का अब आप अरबिक का अगर आप देखें ब्रेकअप्स जो हैं ये वन एग्जांपल ऑफ ब्रेकअप इज देयर इस ब्रेकअप में आप देखें कि उन्होंने सब कुछ टोटल वीक्स हमारे 16 है फ्रॉम जनवरी टिल मई ठीक है नहीं सॉरी फ्रॉम अगस्त टिल दिसंबर और टोटल पीरियड एलोकेशन है 1 पर वीक तो अगर 16 हफ्ते हैं तो हमारे 16 पीरियड होंगे फिर उसमें रिविजन के 3 वीक्स हैं एक्टिव लर्निंग के 13 वीक्स हैं सो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं दे हैव डिवाइडेड द करिकुलम कि किस किस वीक में क्या क्या कराना है कैसे कराना है और उसमें एक्टिविटीज कैसे करानी है और कैसे लेके चलना है देन कम्स ये ब्रेकअप्स और ये सारे सब्जेक्ट्स के ब्रेकअप्स आर अवेलेबल आईसीटी अगर हम ग्रेड 5 की देखें तो आईसीटी में देयर आर सर्टेन करिकुलम देखें इस लेवल तक आके 5-6 तक लॉट ऑफ थिंग्स इन करिकुलम्स को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि आपको काफी समझ आ जाता है कि अच्छा असेसमेंट कैसे ऑब्जेक्टिव इज योर असेसमेंट
जो आपने पढ़ाना होता है बाय द एंड ऑफ द डे उनको आ जाना चाहिए, उसकी असेसमेंट आपने, यानी ऑब्जेक्टिव और असेसमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। तो आप अपनी एक्टिविटीज को खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। नाउ दीज आर द टर्म वाइज ब्रेकअप ऑफ आईसीटी। उसमें उन्होंने ये सारे बताए हुए हैं कि ज़ीरोक्स की रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी का नाम है, उसमें वो एप्पल में कैसे कन्वर्ट हुई, ऑल डिटेल्स आर गिवन। इवन आप इसको रीड करके यू कैन इजीली टीच दीज मेन नेटवर्किंग थिंग्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, बड़ी डिटेल में है ये भी। देन गोइंग टू द लर्निंग टू प्ले, सर ने जिक्र किया था, ये बहुत ही इंजॉयबल चीज़ है। इसमें उन्होंने सब, और ये खाली छोटों के लिए नहीं है, ड्रामेटिक प्ले, ये वो चीज़ें हैं जो हम बड़ों को भी कराते हैं, लेकिन छोटों को हमने मतलब आइडियाज़ दिया हुआ है, और इसी को आप बड़े फॉर्म में जो है वो ये 165 पेजेस की है, बट इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। लर्निंग थ्रू ड्रामा, लर्निंग थ्रू सैंड प्ले, लर्निंग थ्रू वाटर प्ले, डो एंड क्ले, टेबल टॉप, ये सारा अगर आप देखते जाओ ना, मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ कि हाउ मेनी थिंग्स आर रैशनल, कॉमन प्रिंसिपल्स क्या हैं अर्ली ईयर्स एजुकेशन के। मुझे तो लगता है कि आप अर्ली ईयर्स के वो बन जाते हो, स्पेशलाइज थ्रू दिस करिकुलम व्हिच दे हैव डिजाइन। ड्रामा प्ले, उनको ना पूरे आइडियाज दिए, दिखाया हुआ है, बताया हुआ है व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, नेम्स बताए हुए हैं, वोकैबुलरी जो आपने उनकी थ्रू दिस प्ले इम्प्रूव करनी है, लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव करनी है, सैंड प्ले में क्या क्या चीज़ें यूज होती है। आपने देखा होगा पार्क्स में मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द किड्स दे आर प्लेइंग विद द सैंड, विद दीस टॉयज, सो इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ दिस इज द करिकुलम। ये आप देखें कि यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी वर्कशीट्स हैं जो कि बहुत डिटेल में, ये देखिए अब ये इट्स ऑल, these are jigsaw puzzles, these are again the basically what you can say games हैं जो कि बच्चे enjoy करते हैं, they really enjoy ये snake और earth forms को उनके कमरों तक पहुंचाना है। फिर it's something related to आप अगला देखेंगे स्टार्स हैं, स्काई पे लेके जाने हैं, ट्रेस द वेव्स, मतलब इट इज रिलेटिव। बोन को आपने, बोन इज रिलेटेड टू डॉग, ठीक है, आइसक्रीम इज रिलेटेड टू द चाइल्ड, कैरेट इज रिलेटेड टू द रैबिट। तो एक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है बट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, और ये बहुत है, ये बहुत बड़ा, आप ये देखिए ना, बहुत सारी इसमें वर्कशीट्स। सो इट्स 3:59, ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। बड़े सुकून से सबने सुना, and I'm happy that I hope that you have seen. Thank you so much, Dr. Sabha. In fact, you made such a powerful and academic contribution to our understanding of Thank these you. curriculums. I must say the insight which you have given was one of the best ever way of explaining our curriculums to the audience of this OIC. So, dear teachers, I'm sure you have Thank you. thoroughly enjoyed, and this this is important that whatever you're using, the documents you have, you understand them, you have faith what quality do they bring, and you have confidence how effectively they can help you to make your own work easy. So it's not that we are stressing upon the use of these documents to want you to rigidly follow a structure, but it is to give you the flexibility of getting ideas from here, bringing more ideas together. So I would like to thank Dr. Majida Hassan. Thank you so much, dear speaker, for enlightening our audience. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for giving me the opportunity. Yeah, scholarship and an in-depth analysis. It was so beautiful. I'm sure all these teachers would have greatly benefited from this session. Dear teachers, before we say goodbye, please remember to mark the second attendance of the day. I have already shared it in the group. If you have marked it, that's great, because I'll leave it here for a while so that you all could mark it. I'm sharing it in the link again. My record shows only 80 of you have marked the attendance, while you were 100
plus people sitting. So make sure you mark your attendance before you leave. So with this, I would like to offer a thank you note to all our dear participants of this IAUS Schools National Training Programs online induction course. Your presence will not only create a difference in your personal excellence, but in your professional growth as well as your excellence in the classes, and will contribute to the effectiveness of our youth and this country. तो आपने अगर attendance mark कर ली है, let me see that. I don't want you to be missing upon it and then sending me personal messages. That becomes too difficult. There are still 82 of you who have marked. Don't miss marking your attendance. Please click on the link, mark your attendance. It's in the chat box and be recorded here with us. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.